Good morning, student. Jai Swaminarayan. Welcome back to Atmi Green School, Jhareshwar Bharuch. My name is Swati Sharma, and it's class 9 maths, and our chapter is circle. Okay. In this chapter, yesterday we learned some theorems. Okay. Which theorem we learned? First theorem is says us equal chord of a circle subtend equal angle at the center. Okay. Now its converse is if the angles subtended by the chord of a circle at the center are equal, then the chords are equal. Okay, so which result we have to find? If from these two theorems we find if two chords of a circle or congruent circle are equal, then they subtend equal angle at their center. Okay, अगर दो chords equal हैं तो वो center से equal angle बनाएंगी, और अगर सेंटर से इक्वल एंगल बन रहा है तो वो दोनों कॉर्ड्स कैसी हैं? इक्वल है. ओके, अंडरस्टैंड. सो दिस इज द रिजल्ट वी हैव फाइंड फ्रॉम दिस टू थ्योरम्स. ओके, नाउ सम एक्सियोम्स आर देयर. मीन्स टू आर्क ऑफ द सेम सर्कल आर कॉल्ड congruent arc if one are superposed to other. Okay, we know that. And so we can say that if two chords of a circle are equal, okay, अगर दो chords equal हैं, then their arc are also congruent arc are also equal, and is conversely if two arc of a congruent circle are equal, then their corresponding chords are equal. Okay, these are called axioms of equal arc. Okay, now we know if chords are equal, then arcs are equal, and arcs are equal, then chords are equal. So we can say that congruent arc of a circle subtend equal angle at their center. Okay, and conversely if two arc of a circle subtend equal angle at their center, then the arcs are congruent. Okay, and in fact we can say that if two arc of a circle are equal, then they subtend equal angle at their center, and conversely if two arc of a circle subtend equal angle at their center, then the arcs are equal. Okay, then we learn our third theorem. The perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord. Theta bisect the chord. And next theorem says the line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord. Okay, understand? And then we learn there are one and only one circle passing through three given non-collinear points. Okay, understand? And what corollary we have to find? means अगर प्लेन में हमने सर्कल पर कोई बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला है ऑफ अ chord, so that perpendicular bisector is must be passing through the center of a circle. Okay, and the perpendicular bisector of two chord of a circle intersect at the center of the circle. Okay, they are intersect. अगर हम perpendicular bisector डालते हैं नॉन पैरेलल chords पर, तो वो bisect करेगा कहाँ पर? सेंटर पर. Okay, understand? And there are on one and only one circle passing through three given non-collinear points. Okay, then we learn the our equal chords of a circle are equidistant from the center. Okay, equal chords of a circle are equidistant from their center. We learned this theorem 11.6 in our previous video. Now we learn 11.7, that is converse of this theorem is chord of a circle that are equidistant from the center of a circle are equal. Okay, means how to prove this theorem? Just see. Let's draw the circle. Okay, or okay, these are two chords A, B and C, D. This is our center O. Okay, this is perpendicular bisector, and this is M and N. Okay, so
given AB and CD are chord of a circle with center O, OM perpendicular to AB. OM is perpendicular to AB. It's given. Okay. OM is perpendicular to AB and ON is perpendicular to CD. Okay. Understand? So हमें प्रूफ क्या करना है, AB इज इक्वल टू सी डी. क्या AB इज इक्वल टू सी डी होगा? सो हम क्या करेंगे, ओ ए और ओ सी को ज्वाइन कर देंगे बिकॉज दे आर रेडियस ऑफ अ सर्कल. ओके, सो लेट्स प्रूव दैट इन ट्रायंगल दो ट्रायंगल मिल रहे हैं ए ओ एम एंड ओ सी एन. ओके, ओ ए एम एंड ओ सी एन. These two triangle we get OM is equal to ON because it's given. OM is equal to ON, it's given. Okay, now OA is equal to OC because it's radius of a circle, and angle AMO is equal to angle CNO because they are perpendicular. अब हमें पता है कि अगर ये perpendicular है मीन्स क्या है, 90 डिग्री. ओके, इफ इट इज़ perpendicular then it is 90 डिग्री. ओके, ये क्या है, रेडियस है सर्कल की, ये हमें गिवन है. सो वी कैन से दैट RHS rule of congruency say though these two triangle are congruent to each other. Which two triangle? Triangle AMO and triangle OCN. Okay, these two triangle are congruent to each other. Now AM is equal to 1 by 2 AB because perpendicular from the center bisect the chord. अगर परपेंडिकुलर है सेंटर से जा रहा है तो वो क्या करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा. तो वी कैन राइट इट ए एम इज इक्वल टू 1 by 2 ए बी. सिमिलरली सी एन इज इक्वल टू 1 by 2 सी डी. ओके, सो 1 by 2 ए बी इज इक्वल टू 1 by 2 सी डी बिकॉज ए बी इज इक्वल टू सी डी. ओके, अगर ये दोनों इक्वल हैं, ए एम इज इक्वल टू सी एन, हमने बोला ए एम इज इक्वल टू सी एन इज गिवन. सो इफ़ ए एम एंड सी एन इक्वल हैं तो हम बोलेंगे कि ए बी इज इक्वल टू सी डी बिकॉज ए एम इज इक्वल टू सी एन. सो वी कैन राइट इट. सो chords ऑफ अ सर्कल that are equidistant from the center are equal in length. Okay, understand? So these are our theorem number 10.7. Okay, now is cyclic quadrilateral. So student, this is our theorem 10.11. The sum of either pair of opposite angle of a cyclic quadrilateral is 180 degree, and converse of this theorem is if the sum of pair of opposite angle of a quadrilateral is 180, then the quadrilateral is cyclic. Okay, understand? So this is our theorem of 10.11 and 10.12. Okay, understand? So this is our theorem. Now let's see the example number 3. In figure 10.32, AB is a diameter of a circle. AB is given diameter of a circle. Okay, now circle CD is a chord equal to the radius of a circle. Okay, AC and BD when extended intersect at point E. Okay, prove that angle AEB is equal to 60 degree. We have to prove angle AEB is equal to 60 degree. Okay student, so what we can do for this, see here, so let's do some construction. What is given? AB is a diameter and CD is a chord of a circle. Okay, and the radius of a circle, O is a radius of a circle. Okay, AC and BD when extended intersect at E. Okay, so we have to prove AEB is equal to angle 60. Okay, so what we give what is the construction point? See, हम OC and OD को join कर देंगे. Okay, and we have to join BC also. Okay, so here we can see the triangle ODC. Okay, is equilateral.
ट्रेंगल ODC is equilateral because see here हमको उसने हम we know that OC is a radius of a circle, OD is also radius of a circle, and it's given CD is a chord but it is equal to the radius of a circle, so it is equilateral triangle. अब if it is equilateral then we know that equilateral triangle is also an equiangular. Okay, it's equiangular also, so we can write all the angles is 60 degree. So COD is equal to 60 degree. If COD is equal to 60 degree, now CBD is equal to what is angle B? What about angle B is equal to 1 by 2 angle COD? 1 by 2 angle COD, because we know that theorem 10.8. What is our theorem 10.8? 10.8 theorem say us the angle subtended by an arc of at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. Okay, so theorem 10.8 से हम लिख सकते हैं CBD is equal to 1 by 2 COD. Okay, so now CBD is equal to 30 degree because COD is equal to 60, so CBD is equal to 30 degree. So again ACB is equal to 90 degree. Because why it is 90 degree? ACB is 90 degree because see here this is सेमी सर्कल, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 180 है. सो जो ये कॉर्ड से बनेगा ACB, ये कितना होगा? 90 डिग्री होगा बिकॉज BCE इज इक्वल टू 180 माइनस. अब हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है बच्चों? सी हम यहाँ पर कौन सा थ्योरम लगा? यहाँ पर भी वही थ्योरम 10.8 लगा है बिकॉज वाई ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज वी नो दैट the angle subtended by an arc of the center is double the angle subtended by at any point of the remaining part of the circle. Okay, so यहाँ पर जो C एंगल बन रहा है वो दूसरे पार्ट पर बन रहा है. सो ये वाला एंगल अगर 180 है बिकॉज दे आर लीनियर पेयर. ओके, स्ट्रेट लाइन दिख रही है तो ये 180 है, तो ये कितना होगा एंगल C? 90 डिग्री. ओके, सो BCE. नाउ वी है इफ़ वी वांट टू फाइंड BCE. So 180 minus ACB, that is 90 minus 30, that is 60 degree. Okay, understand? Because ACB जो हमने निकाला था वो हमारा है 90. 180 minus 90, that is 90. Now CEB is equal to 90 minus 30, that is 60 degree. That is so AEB is equal to 60 degree. Okay, understand? So this way you have to prove the question. Now example number 4. See the example number 4, 10.33. ABCD is a cyclic quadrilateral in which AC and BD are its diagonal. If AC and BD are its diagonal, then if angle DBC is equal to 55 and angle BAC is equal to 45, then find BCD. We have to find BCD. Okay, so CAD is equal to DBC is equal to 55 degree because it's given. Okay, angle in the same segment. अगर एक एंगल हमें दिया हुआ है तो सेम सेगमेंट का एंगल क्या होगा? 55 होगा. एंड वी ऑल्सो नो DAB is equal to CAD plus BAC. Okay, so 55 plus 45, that is 100. So DAB is equal to 100. Okay, plus BCD. What about BCD is equal to 180 because they are opposite angle of a cyclic quadrilateral. Okay, so BCD is equal to 80 degree. Okay, this way we have to find BCD. Okay student, now see the example number 5. Two circles intersect at point A and B. AD and AC are diameter to the two circle. Okay, दो सर्कल का डायमीटर क्या है? AC एंड AD and AC are the diameter. Okay, prove that B lie on the line segment DC. So we have to prove B lie on the line segment DC. So ABD is equal to 90 degree because angle in a semicircle. Okay, same here. ABC is equal to 90 degree because
angle in a semicircle. Okay, so ABD plus ABC is equal to 90 plus 90, that is 180 degree. Okay, therefore DBC is a line, that is B lies on the line segment DC. Okay, understand? This way you have to prove the question. Okay, now example number 6. Let's see example number 6. In example number 6, it's given, prove that the quadrilateral formed by the internal angles bisector of any quadrilateral is cyclic. Okay, so we have to what we have to prove, ABCD is a quadrilateral. Okay, in which the angle bisector AH, BF, CF and DH of internal angle ABCD respective from a quadrilateral EFGH. ओके, सो ये EFGH जो आपको छोटा वाला क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है वो हमें बोलना है, बताना है कि ये क्वाड्रिलेटरल है. ओके, सो FEH इज इक्वल टू AEF इज इक्वल टू 180 डिग्री. मतलब जो E एंगल है और जो F, जो दोनों E एंगल्स हैं वो क्या रहेंगे, 180 डिग्री होंगे. 180 माइनस EAB माइनस EBA बिकॉज C. ओके स्टूडेंट, सी हियर FEH, थोड़ा फिगर को ध्यान से देखेंगे. सी हियर FEH एंड AEB both are vertically opposite angle. If both are vertically opposite angle, then both angles are equal. Okay, understand? And also अगर हम इसे वर्टिकली और एक ही ट्रायंगल के एंगल्स हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, 180 माइनस EAB मतलब एंगल A और एंगल B को अगर मैं माइनस करूँगी 180 में से तो मुझे कौन सा एंगल मिल जाएगा, एंगल E फाइंड हो जाएगा. ओके, अंडरस्टैंड? सो 180 माइनस 1/2 एंगल A प्लस एंगल B. ओके, बिकॉज एंगल A और B 1/2 क्यों हुआ, 1/2 ऑफ एंगल A एंड एंगल B, एंगल A प्लस B. बिकॉज अगर हम उससे बोल रहे हैं क्वाड्रिलेटरल है और बाइसेक्टर है तो हम क्या बोलेंगे उसे, 1/2 एंगल A प्लस एंगल B. सो इट बिकम FGH इज इक्वल टू CGD इज इक्वल टू 180 माइनस 2GCD. ओके, माइनस GDC बिकॉज सी हियर, यहाँ पर भी सेम होगा. यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला जो G एंगल है ये दोनों आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, कौन सा, DGC. ओके, सो DGC एंगल के लिए जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भी हमें करना है 180 माइनस 1/2 इंटू एंगल C प्लस एंगल D. सो अगर ये दोनों को हम प्लस करते हैं तो हमारे पास बचेगा FEH प्लस FGH इज इक्वल टू 180 माइनस दिस. ओके, सो 180 प्लस 180 दैट इज 360 और 1/2 एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D. सो 360 माइनस 1/2 360 because this is a quadrilateral. Okay, so we can write it 360 minus 180, so it is 180. Therefore the theorem prove, because हमको क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था अपोजिट एंगल्स का एडिशन कितना है, 180 है. so if it is 180, so quadrilateral is cyclic. Okay, understand? So this way you have to prove the questions. Okay, understand? Now you have to solve the question exercise 10.5. okay, there is 9 question, no 12 question, there is total 12 question. So practice it. Okay, I will solve first question for you. See the first question, read out. Exercise 10.5, question number first. What is your question number first? Question number first is, in a figure A, B, C are 3 points on a circle
with center O such that BOC is equal to 30 degree and AOB is equal to 60 degree. If D is a point on a circle other than the arc ABC, so find ADC. We have to find ADC. So see here AOC is equal to AOB plus BOC. ओके बिकॉज दे आर जो भी हमारा सर्कल है, सिंस आर्क ABC मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. सो अगर ये 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल क्या होगा, उसका हाफ होगा, बिकॉज आर्क से हम और कहीं पर भी एंगल बना रहे हैं सर्कल पर तो वो क्या रहता है 1/2 रहता है. सो 1/2 इंटू 90 डेट इज 45 डिग्री. ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर सेकेंड थर्ड. आप कोशिश करिए इसे करने की. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट टेल मी ऑन व्हाट्सएप. हैव अ गुड डे.